Hi everyone. Today I want to share you my review of CA Inter May 26 attempt and my result too, which was negative by the way. Firstly, I'll give you a little context. I passed my CA foundation in first attempt in May 25, and this was my first attempt in CA Inter. I gave both groups examination, and I knew my preparation wasn't perfect, but the marks that I've got isn't what I was expecting. Firstly, let's start by telling you the marks so you know the full picture of what's happening here. In Group 1 Advanced Accounts, I got 40, Corporate and Other Laws was 42, Taxation was 29. It went pretty badly. I feel like my taxation is really bad at this point. And the paper was kind of tough too. I don't know about grace or something, if they have given grace or not, but yeah, bad marks. Total 111 and result unsuccessful. It's tough to actually see this unsuccessful because I was always a above average kid, not a very studious one, but I did kind of good in the examination. I got 95 in 10th, 89 in 12th, first attempt foundation. So everyone was like, इसका तो हो ही जाएगा, he's gonna pass for sure, but ऐसा नहीं हुआ. And everyone is quite supportive because I'm still quite young. I'm 18 right now. And while giving my CA into September attempt, then also I'll be 18. I'm quite young in that sense, but still, like, it hurts, it actually is fucking frustrating. Okay, never mind, I'll tell you the group 2 result too. Costing was 48, it was fairly easy paper, but still less marks. Auditing 38, which I don't understand. I was getting 22 marks in MCQs, so I got 16 marks out of 70. Like, my audit is not that bad. I used to cram audit all day, all night. If anyone who knows me or my neighbors and all, used to say, "ये क्या बोलते रहता है?" I used to say the essays and chapters aloud and explain myself, and that was a good technique. But I see, yeah. FMSM I got 39, which is again nice. Total 125 of group 2 and result unsuccessful. Grand total was 236, which is 64 marks, I guess, from the total. A long way to go. That's why I've decided to give single group in September, and then hopefully if I pass, then I'll give second group in January 27. Now, keeping this aside, I wanna give you a little review of what happened. My coaching classes did fuck up a lot. See, I take full responsibility for my result. I know this result is entirely my fault, but I just want to give you some context so that you also don't make the same mistakes, and just to fucking, bitch about those coaching classes and all. So what happened is, basically anyone who is giving CA Inter knows कि हमें 3 महीने का स्टडी पीरियड मिलना चाहिए एटलीस्ट 2.5-3 months whatever. मुझे मिला, मेरी क्लासेस खत्म हुई थी 7 मार्च के अराउंड, एंड मेरा भी उसमें बैकलॉग था, तो मेरी तो अराउंड 15-16 के अराउंड ही खत्म हुई थी, विच गेव मी हार्डली 1.5 months फॉर माई सेल्फ स्टडी. एंड ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज हमारी क्लास का ग्रुप एंड वन मोर फक अप बाय माई क्लास, पहले ग्रुप 2 पढ़ाया उन्होंने, नॉट ग्रुप 1, एंड दैट आई वॉज नाइव. मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ था, आई वॉज हैप्पी, मुझे लगा कि मैं कर लूँगा कोप अप. बट उन्होंने ग्रुप 2 पढ़ाया तो उन्होंने आधे 1 महीने का गैप दिया. उसमें मैं ग्रुप 2 थोड़ा बहुत पढ़ा, बट भाई मैं कितना ही पढ़ लेता. एंड वैसे भी ग्रुप 2 जब पहले बार पढ़ते हैं ना, तो ऑडिटिंग एंड ऑल उतना नहीं समझ आता, बिकॉज हमने अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं होता है. तो दैट वाज सेकंड फक अप. So I won't name the classes here. If you want, I'll name them. I don't want. I'll name it at the end, and I want them to like improve this. Hopefully, बहुत उनके सीन होते रहते हैं उनका क्लास में. It's not that big, but it's still fairly decent in terms of size. My exams, I thought group 2 में तो मैं पास हो ही जाऊँगा. अच्छा ही गया है पेपर. ग्रुप 2 मैंने पहले पढ़ा था, सो पहले आपको पता है मोटिवेशन हाई होता है, पहले हम बहुत पढ़ते हैं.
मुझे लगता था मेरा ऑडिट और एफएम तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, कॉस्टिंग तो चल फिर भी इतना नहीं था, ऑडिट और एफएम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट वही 1.5 मंथ्स में आई वॉज फर्स्ट रिवाइजिंग द अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये सब मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। देन उसके चक्कर में आई कुडंट गिव ग्रुप 2 प्रॉपरली टू। मेरे साइड से ये भी गलती होगी कि जब मुझे पता था मेरी प्रिपरेशन इतनी इस लेवल की है, सो आई शुड हैव ऑप्टेड फॉर 1 ग्रुप नॉट 2 ग्रुप्स। बट वही मेक पेरेंट्स प्राउड, डू समथिंग गुड एंड ऑल दैट के चक्कर में I chose both groups and here we are. I want to make it clear I don't regret anything. I don't feel bad or anything. I'm still the same person even if the result was negative, but I don't want to hide from it because accepting the result is actually really difficult. मैं जब result आया था I was staring at it for half an hour कि कैसे. I was just staring. I didn't do anything. I told my mom call करके and she was like okay I'll come home. And till the time she came home I was just staring at the fucking result. And honestly let's talk about the passing percentage a little bit because I think सब उसमें interested तो होंगे. The pass percentage for both groups जो मैंने appear किया था was 8.47%. Single group exact नहीं पता, it is something 10% for group 1 and for group 2 it's for 16% around, which is less. 8%, 8.5% is really less. Everyone on the internet was expecting 12, 13, 10 to 12, 12 to 14, इसी range में. No one thought कि पिछले Jan attempt में which was 9 point something उससे भी कम हो जाएगा. So yeah, tough checking तो है. ICAI is clearly making it very clear here कि इंटर टफ करना है. एंड अभी फाउंडेशन का भी रिजल्ट आ रहा है 3 जुलाई को, तो लेट्स सी उनका क्या होता है. आई एम गेसिंग उनका भी समवेयर 13-14% आएगा मेरे हिसाब से. अगर उनका ज़्यादा आया देन आई विल बी फकिंग पिस्ड बिकॉज व्हाट द फक डूड. हमें सब इंटर का ही क्यों टफ करना है फिर. Okay, so I don't want to rant too much here. This is my first video. If you are seeing this video, I'm planning to make shorts or like YouTube shorts of my comeback, so called, of studying again and preparing for CA Inter again, because I'm at a position I feel like many people would relate कि फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में हो गया, स्कूल में भी अबव एवरेज थे, चलो उतने पढ़ाकू तो नहीं थे बट अबव एवरेज थे, पढ़ लेते थे, हो जाता था, मार्क्स आ जाते थे ठीक ठाक. पर अब CA इंटर में बोथ ग्रुप्स दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड इवन इफ सिंगल ग्रुप दिए तो नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में. एंड मुझे दिल से अटेम्प्ट वाला लूप बहुत चुपता था, बट स्टिल अब CA लिया है तो करना तो पड़ेगा. सो या I'm just thinking at this point कि आर्टिकलशिप में अब क्या होगा, बट ठीक है, that's a different question. I'm just gonna go to the gym, dude. Gym नहीं रुकना चाहिए. तो बाइसेप भी fucking when the time is bad everything is kind of bad. But anyways, I'm gonna head to the gym. आज थोड़ा माइंड क्लियर करूँगा. कल से मैं स्ट्रैटेजी आज रात को फिर से बैठ के थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करूँगा कि हाउ आर वी गोना डू दिस. बहुत सारे फैकल्टीज़ के वीडियोस तो हैं ऑनलाइन एंड होपफुली दे हेल्प टू. दे आर प्रीटी हेल्पफुल, सम ऑफ देम एटलीस्ट. कुछ तो बस इमोशनल कंसोल कर रहे हैं ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट. इमोशनली कंसोल कर रहे हैं विच इज़ फाइन टू. बहुत लोगों की ज़रूरत भी है. आई काइंड ऑफ फील लाइक इट्स नॉट एज मच एज एन इमोशनल सेटबैक बिकॉज जो रिजल्ट था भाई, जो डिजर्विंग था वही मिला है. Now we can argue पास परसेंटेज कम था एंड ऑल, बट स्टिल बच्चे पास होते ही हैं. AIRs फिर भी आती हैं. सो आई फील लाइक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेस्ट मूव दैट वी कैन डू. क्योंकि किसी और प्रॉब्लम डाल के क्या ही हो जाएगा, खुद का माइंड फक होगा. एंड वैसे ही भाई सिलेबस देख के इतना माइंड फक होता है, अब इसमें भी कहाँ माइंड फक करे ICAI को ब्लेम करते हुए. एंड ऑनेस्टली बीच में भी हैकिंग एंड ऑल की बहुत बात चल रही थी, वो भी क्लेम्स डिसमिस कर दिए थे ICAI ने. एंड आई डू ट्रस्ट माई इंस्टीट्यूट. ICAI की बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है इस मामले में एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ ICAI. हम ही मेंबर्स बनेंगे, हम ही आगे चल के CCM सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स बनेंगे, इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएंगे. सो होपफुली एवरीथिंग इज़ एथिकली डन एंड इफ सो आई डोंट हैव एनी रिमोर्स. जैसा आना था आ गया. होपफुली आई विल कंटिन्यू माई सीरीज़ जहाँ पे मैं अपना एवरीडे रिकॉर्ड करूँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ.
let's see how will that unfold. मैं कैसे balance कर पाऊँगा उसको studies कर, but I still have 2 months kind of. So yeah, do tell me in the comments कि आपका कैसा रिजल्ट रहा. अगर आप पास हुए तो बहुत congratulations, अगर आप फेल हुए हो तो welcome to see it. I guess that's it for today. We'll meet again tomorrow, hopefully very soon, and see you. And don't lose hope. सब अच्छा होगा in the future. In the end, it all turns out good. I've noticed that. Bye bye.